मेरे को बहुत मज़ा आया, मैं दोबारा आना चाहूँगी। इंडिया से सब अलग है, बहुत जानने को मिला मेरे को यहाँ पे। अच्छा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। Hi everyone, I'm Neha. I'm Ashish. Welcome back to our channel Indian Couple in Europe. स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंडियन कपल इन यूरोप में। तो आज का दिन है कुछ खास क्योंकि हम आए हैं एक स्पेशल एक्सपीरियंस पे। एंड आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एम्स्टर्डम फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट बोट एक्सपीरियंस यू कैन हैव। एंड एज यू नो मॉम डैड यहाँ पे आए हुए हैं एंड हम उनको घुमाने आए थे एंड हमने साथ में सोचा कि हम आपको वीडियो में भी दिखा देंगे दैट यू नो हाउ यू कैन सी दिस ब्यूटीफुल सिटी। एंड ऑफ कोर्स इस वीडियो में हम आपको सब टिप्स भी देंगे कि कैसे कैसे इन केस आप घूमने आए या आप यहाँ पे आए हुए हैं, then you know what kind of tips you need to use so that you know you can save your money, you have one of the best experience you can have and you can avoid one of the most जहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। So then इस वीडियो में हम आपको वो सब इंफॉर्मेशन देंगे। So without wasting time, let's get started. We need to go this side, huh? So guys, अब हम अपना बोट टूर स्टार्ट करेंगे और मैं आपको बता दूं हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है नेक्स्ट टू द एनी फ्रैंक हाउस। हमने ऑनलाइन बुकिंग की है और हमने बुकिंग की है फ्लैगशिप एम्स्टर्डम से और बस अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और आपको भी साथ लेके चलते हैं। सो एज यू कैन सी हम बोट में बैठ चुके हैं, मम्मी पापा भी बोट में से एकदम कंफर्टेबली सिट हो चुके हैं। एंड देन आई थिंक उस साइड पे आप देखोगे उस सेक्शन में बोटल्स सब यू नो उनका एम्बियंस सब सेट हो चुका है एंड बोटिंग इज गोइंग टू स्टार्ट सून एंड then we start this journey. And I say hi to Papa. Hi. And this is where we are going. अरे पापा को शॉट दे दो। Hi. Over here on these buildings that are coming up, you see 7 houses with the names of the 7 provinces. So जब आप बोट टूर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये यूनिक 7 हाउसेस इन अ रो। सो एक्चुअली ये डिपिक्ट करते हैं ओरिजिनल डच प्रोविंसेस। तो आप देख सकते हैं जैसे यूट्रेक्ट, ज़ीलैंड, हॉलैंड एंड अदर्स। सो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। ये जो आप हाउसेस देख रहे हो मेरे सामने, यहाँ पे विंडोज़ का कलर आप नोटिस करोगे तो सिमिलर है। तो मैं बता दूँ अगर आप यहाँ पे घर लेते हैं तो आपको म्यूनसिपैलिटी से कलर कोड लेना पड़ता है टू इंश्योर कि आप ये ब्यूटी को मेंटेन करें और वही कलर करें जो म्यूनसिपैलिटी ने आपको दिया है। तो जब आप एम्स्टर्डम में कनाल टूर करेंगे तो आपको बहुत सारे हाउस बोट्स देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, इनकी ओरिजिन है एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। उस टाइम ये एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया के साथ आए थे क्योंकि उस टाइम पे चल रही थी बहुत ज़्यादा राइजिंग डिमांड ऑफ हाउसेस। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि ये जो बोट्स उस टाइम पे फ्लोट कर रही थी उनको इन्होंने हाउसेस में कन्वर्ट कर दिया और वो बन गए हाउस बोट्स। और बस अब हाउस बोट्स में एम्स्टर्डम में इनका एक परमानेंट एड्रेस है और यहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
London, yes. This is what we call the Amsterdam Chardonnay, ladies and gentlemen. It is quite clear. 24 different sweetwater fishes swim in this water. And even our queen has swum in this water before during the Amsterdam City Swim. The Amsterdam City Swim is a fundraiser where 3,000 people swim on this river and then they hit a canal. Now I think if the Queen of the Netherlands is able to swim in the water, we can too. Okay, you jump first. I would. We'll follow. This place right there. I mean, if it's now time for me to stop working, I think I would definitely take a dive. जहाँ से क्रॉस करने वाले हैं उसको एम्स्टर्डम का बहुत ही पिक्चरस्क स्पॉट माना जाता है और जब भी आप गूगल पे एम्स्टर्डम सर्च करोगे तो ये स्पॉट के फोटोज तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप इसको मिस ना करें। और मैं बता दूँ इस लोकेशन को 7 ब्रिजेस एम्स्टर्डम के नाम से जाना जाता है। This big Amsterdam flag, this is our Downing Street tent, so to say. When you become a mayor of Amsterdam, this is where you live.
Hey guys, best captain in town, so tip him well, yeah? Ladies and gentlemen, we're almost nearing the end of our tour. I hope you enjoyed it. If you did, thank you so much. अभी मम्मी से पूछते हैं कि आपको कैसा मज़ा आया, कितना अच्छा लगा आपको। मेरे को बहुत मज़ा आया, मैं दोबारा आना चाहूँगी। इंडिया से सब अलग है, बहुत जानने को मिला मेरे को यहाँ पे। अच्छा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, मैं दोबारा आने को तैयार हूँ। So we end this now and we hope to see you next time. Thank you so much for your time and we see you soon.